Hello friends and welcome to the Hindu Editorial Analysis. So well my dear friends, I'd like to remind you all, अगर किसी की भी ऑनलाइन क्लास में जो भी enrolled बच्चे हैं उनकी क्लास हो तो 3 बजे वो क्लास शुरू होने वाली है। आपकी ईमेल आईडीज़ पर लिंक आ चुके होगा तो आप ज़रूर जो है उसको क्लिक कर लीजिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, देखा जाए तो जो ऑनलाइन बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा जाए तो अपना ग्रुप भी बना रखा है और अगर अभी तक आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर मान लेते हैं आप ऑलरेडी ऑनलाइन बैच में इनरोल्ड है तो, अदरवाइज आपको उस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। नाउ हैविंग सेड दैट गाइस, तो देखो भाई अब बारी है आज के एडिटोरियल एनालिसिस करने की। सो इनिशियली द टाइमिंग वाज 12:30 जब ये एडिटोरियल एनालिसिस होना था, बट देन अगेन वी हैड अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, तो कि अचीवर्स अड्डा पे आए और जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया होगा रिगार्डिंग हिज जर्नी ऑफ बैंक। और अब देखा जाए फाइनली वी आर राइट हियर विद द एडिटोरियल एनालिसिस। सो विदाउट गोइंग एनी फर्दर, लेट्स टेक अ लुक एट द मोटिवेशनल कोट that we have here for you. So always bear in mind that that your own resolution to succeed is more important than any one thing. Abraham Lincoln said these words. तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, right? A lot of dreams, they die just after they got formed because of the fear that what exactly will people say, how will people react, all right? अब एक चीज़ याद रखो, if you feel that you should do a particular thing and it's a great idea and it is going to be successful, then your thinking, the next steps should be around how to make something successful, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि यार अगर मैं इसको ट्राई कर लूँ तो सक्सेसफुल रहेगा, तो फिर अगला थॉट ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, अगला थॉट ये होना चाहिए कि मैं इसको सक्सेसफुल कैसे बना के दिखाऊं। ओके, सो इफ यू हैव एन आइडिया देन बिलीव इन इट एंड वर्क ऑन इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड विद इट। ओके गाइस, सो always bear in mind, keep in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing. तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, शिवम हो गए, सोमेश हो गए, नरेश हो गए, छवि हो गए, पंकज हो गए, सभी लोग लिखे कमेंट सेक्शन में that I will be successful in life. Come on people, write in the comment section, I will be successful in life. तो आप चाहे तो if you want to become a PO, if you want to become a clerk, तो उसमें लिखो I will be a successful bank PO या फिर I will be a successful bank clerk. ठीक है guys? Now, तो that was for the motivation. अब देखते हैं हमारे पास जो e-paper है उसमें आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। So guys, here are the articles for all of you for today. So substance and optics of the summit. Okay. अब देखो बात ये है that the Indian Prime Minister is in China, and he and the Chinese President Xi Jinping, they are having some sort of an informal meeting over there. So that's what is given in this particular article. This is a very good article from civil service point of view and especially for the IR students. Now, अब देखो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिया जाए तो विजडम एट वुहान, द सेम थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वी हैव टू एनालाइज इट बिकॉज नो मैटर व्हाट एग्जामिनेशन यू आर टेकिंग, दिस इज अ प्रीटी गुड आर्टिकल एंड वी शैड analyze one of these articles for sure because basically they are about the same thing. So we will analyze the substance and optics of the summit for sure. Okay, now let's just understand a little more about this. Well, food first. So now this article is about that there is no substitute for hot cooked meals to address poor children nutrition. Now see, this is actually an issue. So perhaps that the Anganwadi programs, although it is supposed to be the largest free meal providing program in the whole world, but still there is a lot of issue and we need to fix these issues for sure. Now then over here, Pyongyang's next steps. Well, so this is about North Korea and South Korea. This will be the first article that we shall analyze today, and it's an extremely important article, hence we'll have to take care of this for sure and we will definitely take care of this article. Now, so guys, that was all about the first page of the articles. Now coming to the next page of this particular editorial. So people as auditors. So social audits ensure a citizen-centric mode of accountability. Now this is actually a pretty important article and I am sure that all the civil service aspirants and the CLAR aspirants, they will definitely take a look at this. Now, an antidote to virtual toxicity. So here's another article for the BGMC and the MGMC guys. I'm sure that they are going to love this article as well. Now then, scary yet
banner. So this is about tobacco products. It's important for each and every examination, whether it's a bank examination or the insurance-based examination. You should definitely read this particular article. Now guys, let's come back to the center screen that we have here for you. Okay, so I can see over here a lot of people are asking about focusing over here. So it just started recently, nobody has got late. Okay, all of you are on time. So now guys, let's start focusing on our most important articles, and then we'll analyze them, we will have fun, and we'll also learn. ठीक है, तो देखो भाई, in this particular class you don't just learn, you actually learn with fun. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मस्ती करते हुए पढ़ाई करेंगे ताकि पढ़ाई भी हो जाए और मस्ती भी हो जाए. So Pyongyang's next steps. Okay, now guys, let's come to the first article that we have here for you. So Pyongyang's next steps, these are the first one. Well, this is the first article for today. Why North Korea is likely to use the Indian nuclear deal model in negotiations. Now let me tell you a brief idea for North Korea. So North Korea, by the way, is actually the neighbor, or rather you can say a sister, country of the South Koreans. All right. But what happened then a war broke out over there, in 1950s, which is called the Korean War. Then in that particular war, the South Korea was supported by the US side, and the North Koreans were supported by the Russian side, and it got really very ugly. A lot of blood was shed. So finally what happened? Two countries, there was a division in the country. South Korea became actually a republic, democratic republic. On the other hand, North Korea actually became a country, it was kind of an autocracy, and still North Korea is an autocracy. Okay, but then again, North Korea constantly faced a lot of threats from all the countries, so it developed its own nuclear program so that it is able to defend itself. But definitely North Korea's dictators are not supposed to be mentally stable by other nations because of their speeches, dangerous speeches, and provocative at times, and also the danger that they pose to the world. All right, so this is the background over here. तो मतलब देख समझ सकते हो कि मेन चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को, जो वहाँ के शासक होते आए हैं, उनको लोग सनकी समझते हैं, और अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. ओके, यस, 1950s में, 1950 के दशक में हुआ था कोरियन वॉर. ओके, so guys, now let's understand this article. North Korea and South Korea have jointly declared that the Korean War will be finally over. North Korean leader Kim Jong-un and South Korean President Moon Jae-in, who met for the first time on Friday, have pledged to ensure peace, prosperity, and unification of the Korean Peninsula. So before I explain this to you, लिख लो comment section में unification equals to togetherness या फिर वापस साथ मिलना. ठीक है भाई? तो यूनिफिकेशन इक्वल्स टू टुगेदरनेस. लिख लो, यूनिफिकेशन इक्वल्स टू टुगेदरनेस, एक साथ होना. यूनिफिकेशन इक्वल्स टू टुगेदरनेस, एक साथ होना. ठीक है. सो अब देखो बात क्या है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है, जो कोरियन वॉर 1950 के दशक चलती आ रही है, अब फाइनली वो खत्म हो जाएगी. जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, और जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, उन दोनों ने ये पर्टिकुलर चीज़ का जो है फैसला यहाँ पर किया है. इन दोनों की जो मुलाकात थी, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं और साउथ कोरिया लीडर हैं, इनकी मुलाकात पहली बार हुई थी फ्राइडे को, और उस टाइम पे जो है इन लोगों ने कसम खा ली कि भाई अब हम कसम खाते हैं, वादा निभाएंगे कि शांति रखेंगे और समृद्धि रखेंगे वगैरह वगैरह. साथ में देखा जाए तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब नॉर्थ और साउथ अलग नहीं रहेगा, अब दुनिया सिर्फ एक देश को जानेगा जिसका नाम होगा कोरिया. ओके, तो वेल काफ़ी अच्छा रहेगा ये. सो बाय द वे, द लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, they met last Friday, and their leaders met and pledged peace and prosperity for the world, and they also said that now there will be only one Korea that is going to exist. Okay, so this is also very good over here. Now let's understand more, my dear friends. Well, optimistic phrases such as a new history begins now and the Korean people cannot remain separated were used, and the mood was one of the optimism and restrained joy. All right, in the light of these developments, it seems that summit between US and North Korea will take place as scheduled. तो अब देखा जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था. आमतौर पे क्या होता है, जब नॉर्थ कोरिया साउथ की बात करता था तो बोला था कि मतलब तुमको उड़ा देंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे और वगैरह वगैरह. लेकिन अब देखा जाए तो वो शब्द बदल करके अच्छे अच्छे हो गए हैं, और बल्कि ये बोल रहे हैं कि अब तो देखो ये नए इतिहास की शुरुआत है और कोरियाई लोग जो हो वो अलग ना रहें, वो साथ में रहें, मिल करके रहें. तो हर कोई देखा जाए तो इसको बहुत ही खुशी के साथ ले रहा है. साथ ही में देखिए मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मई में मीटिंग होने वाली है नॉर्थ कोरिया के लीडर की और यूएस के प्रेसिडेंट की, वो मेरे ख्याल से हो सकती है फॉर श्योर. नाउ
So a lot of, nice phrases such as a new history begins now, and the Korean people cannot remain separated. They have been used during this, they have been used, and perhaps the mood was actually of extreme happiness and joy, and looks like the May meeting between the US President and the North Korean leader will take place as scheduled for sure. So I hope guys that you have been able to understand whatever I've taught you so far. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है. मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं हर कोई सही जवाब देगा. Okay guys, now let's see, take a look at question number 1 that we have here for you. Okay, so synonym. Okay, now what exactly is the synonym for the word unification? Unification जिसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, मुझे ये बताओ इसका synonym क्या होता है. You have got 20 seconds and your 20 seconds starts now. Hurry up people, give me synonym for unification. Last 10 seconds left to answer now. Hurry up. Okay, 5 seconds more people. Hurry up. What's the answer now? Okay, so perhaps a lot of you have answered this particular question over here. Now see, so I asked the synonym over here, and unification, well, I had told you the meaning of unification before. Division means to separate, alag ho jana, division. Then parting once again means alag ho jana, separate ho jana. Disunion मतलब part कर जाना, to go different ways, अलग हो जाना फिर से. और amalgamation मतलब क्या होता है? To combine, मिल जाना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो लोग आपस में मिल गए. ठीक है, द करेक्ट आंसर ओवर हियर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4, amalgamation. So unification equals to amalgamation. लिख लो कमेंट सेक्शन में गाइस, राइट इन द कमेंट सेक्शन. Unification equals to amalgamation. Unification equals to amalgamation. हमेशा से आपको यह याद रहेगा, यही मैं यहाँ पर चाहता भी हूँ. चलो अब ऐसा करते हैं, आते हैं वापस ई पेपर पे और आगे समझते हैं. Now, so pitch for equality, but the differences between Mr. Kim and Mr. Moon on the question of the denuclearization are evident. While Mr. Moon emphasized that complete denuclearization was essential for peace, Mr. Kim did not utter the D word. Alright, तो देखा जाए, लेकिन अब बात ये हो रही है कि जो न्यूक्लियराइजेशन हो रखा है नॉर्थ कोरिया का, उसको कैसे हटाया जाए. क्योंकि देखा जाए तो जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट था उसने ये बोला भी कि भाई ऐसा है कि अब भाई साहब ऐसा है, भाई किम साहब, जब हम लोग साथ में मिल गए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर बॉम्ब रखने की, है ना. क्या पता मतलब दिवाली में आपका मूड हो, आप एक दो छोड़ छाड़ दो, तो क्या ज़रूरत है आप जो है न्यूक्लियर बॉम्ब रखने की. तो लेकिन जो आपका नॉर्थ का जो लीडर है किम जोंग उन, उसने कोई शब्द नहीं बोला डीन्यूक्लियराइजेशन के जरिए, कोई चीज़ नहीं बोली इसके ऊपर. ओके, so definitely the differences have reduced between the North Korea and the South Korea, but still there exists a difference on the denuclearization project, because the thing is that the South Korean president, he also said, he emphasized the fact that, see, now there is absolutely no need for the North to have nuclear weapons, so now they should start their denuclearization. But the North Korean leader did not say anything upon hearing this. Now, the unrehearsed gesture of Mr. Kim of inviting Mr. Moon to cross over the north for a moment in response to the former crossing over the south at the military demarcation line at the DMK, which separates the two Koreas, with a clear indication that the need for equality between them. North Korea will seek parity with South Korea in terms of nuclear security, well-being, which is hard to accomplish in the short term. अब देखा जाए तो लेकिन जो एक और अच्छी बात हुई यहाँ पर वो ये हुई कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, काफ़ी हष्ट-पुष्ट है. वैसे पता नहीं कौन कहता है कि नॉर्थ कोरिया में भुखमरी है, इनकी शक्ल देख के लगता है कहीं से भुखमरी है नॉर्थ कोरिया में. एनीवे, तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर थे, खैर इनको जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे वो ले गए थे बेसिकली साउथ कोरिया, तो बदले में ये भी जो है जो प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, उनको ले गए वापस नॉर्थ कोरिया. ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छी से वहाँ पर मीटिंग चली. और देख के ऐसा लग रहा है कि देखो नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि ऐसा है, आप मुझे सिक्योरिटी दे दो कि मुझे कोई हमला नहीं करेगा, तो मैं अपना तो बेसिकली हम सोच सकते हैं
और इस चीज़ के बारे में कि हम और न्यूक्लियर टेस्टिंग ना करें. Okay, so perhaps now a very good positivity over here that happened is that this guy, this Kim Jong-un, he crossed over the DMK line, the separation line, and went into South Korea. Then also the South Korean president brought him back and asked that whether he can go to North Korea, and he took him to North Korea, made him cross the line. So it's a good thing that that they are actually working on this. But then again, North Korea clearly stated that, see, if we are provided the security that nobody is going to attack us, then definitely we shall stop stockpiling our nuclear weapons, and also we will not test nuclear weapons anymore. Okay, तो I hope guys कि बहुत सारा ज्ञान, बिल्कुल किम जोंग उन के साइज का ज्ञान आपके दिमाग में घुस चुका है, यहाँ पर बढ़िया से बच चुका है. तो जो इनका साइज है इतना मैंने आपको समझा दिया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 that we have here for you now. Question number 2. Next slide. Thank you. So which of the following is not true according to para 1? तो देखो यहाँ पर 3 statements है. Statement A है North Korea and South Korea have jointly declared that the Korean War will be finally started. Statement B is, in the light of these developments, it seems certain that the summit between the US and the North Korea will take place as scheduled. And statement C is, North Korea will seek parity with South Korea in terms of nuclear security and well-being, which is hard to accomplish in the short term. Option 1 is only A, option 2 is only B, option 3 is only C, option 4 is only A and C, and option number 5 is only B and C. So which of the following is not true? You get 30 seconds and your time starts now. Hurry up, my dear friends. Come on. Tell me what's the correct answer. Okay guys, last 5 seconds left to answer now. Hurry up. Okay, so Deepak goes for option A, Lokesh goes for option A, then Ramu goes for option 1, Ankusha goes for option 1, Pritika goes for option number 3. Okay, तो well, अब देखते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या है. देखो, सो ऑप्शन ए जो है देखो उसमें दिया हुआ है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हैव जॉइंटली डिक्लेयर्ड दैट द कोरियन वॉर विल बी फाइनली स्टार्टेड. तो खैर वॉर तो देखो 1950s में स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पर ऑब्वियस है खत्म करने की बात कही गई होगी, जिसका मतलब ये है दैट क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए ही होगा. सो गाइज आप लोग लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन में 2-1 only A is the answer. Write down in the comment section 2-1 only A is the answer over here. चलो, now having said that guys, चलो अब आते हैं वापस हमारे जो ई पेपर है इस पे, फिर आगे देखेंगे. Now, denuclearization is key to the whole process as it means different things to different people. For the US, the models are Iraq, Libya, and the former republics of the Soviet Union, which surrendered their nuclear assets in return for peace and normalization. तो अब देखा जाए अलग अलग देशों के लिए डी न्यूक्लियराइजेशन का ना अलग अलग महत्व होता है, मतलब होता है. जैसे कि अब अमेरिका के लिए क्या है कि इराक ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, लीबिया ने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, और जो सोवियत यूनियन के अंदर दूसरे देश आते थे बहुत सारे, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, और साथ में ये बोला कि मतलब जो वही चीज़ है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स हमसे ले लो लेकिन हमको शांति से एग्जिस्ट करने दो. ठीक है. Now, denuclearization, is actually extremely important in the peace process, but then again, to different parties, it has got a different meaning. For example, for the US, for the Americans, the models are of that Iraq model and Libya model and former republics of Soviet Union, where their countries, which had nuclear weapons, they gave back their nuclear weapons and they said that we simply want peace to exist and we simply want to live normally. But South Korea seemed to have another model in mind, an Indian model nuclear deal in which it gets recognized as a technologically advanced responsible state on the basis of certain strategic assurances. लेकिन देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया को देख के ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में ना अलग किस्म का मॉडल चल रहा है न्यूक्लियर पावर के रिगार्डिंग. फॉर एग्जांपल, वो चाहता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको फॉलो करे, जिससे कि उसको पहचान ऐसे देश की मिले जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है लेकिन देन अगेन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और गलत तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता है. ठीक है. तो ऑब्वियस है कुछ स्ट्रैटेजी एश्योरेंस पे बेस्ड. ओके.
Now, so but the North Koreans over here, they have got a different kind of a model in mind. They have got an Indian nuclear model in mind, where they think that their country they want their country to be recognized as a technologically advanced and a responsible state, which is definitely capable enough of, firing nuclear weapons, but will not do that irresponsibly. So that's what they want to be, identified as. But anyway, guys, now I think you should take a look at question number 3 that we have here for you. Come on, people. Let's have question number 3. Kya baat hai? Kangai Kimraji. Thank you. So please increase your speed, sir. Well, clumsy over here. Now you have to give me the synonym for the word clumsy. The options are adroit, inept, clever, and cool. So sahi jawab kya hoga, guys? You get 20 seconds and your time starts now. Hurry up, people. What's the answer over here? Last 10 seconds to answer now, people. Hurry up. Okay, 5 seconds left to answer now. Hurry up, guys. What's the meaning over here? All right. So, well, Mahi goes for option 3. Abhi says for option 2. Pushpa Kumari, option 3 कह रहे हैं. Pritika wanted something else. I don't know what she's saying. Kunal goes for option 2 and Vijay goes for option 2 as well. Anyway, guys, तो अब well देखा जाए तो I think it's my turn to give you the correct answer right now. So, see, okay, now you have to give me the synonym for the word clumsy over here. So, adroit means somebody who's extremely, able to do something very talented. Inept means someone, who's not very good at doing something, right, my dear friends? Then clever means somebody who's very clever, and जो बहुत चालाक किस्म का हो, जिसको पता हो कौन सा काम कैसे करवाना है. कूथ मतलब जो काफ़ी कल्चर्ड किस्म का हो, राइट गाइस. लेकिन अब इनेप्ट का मतलब क्या है? जो बड़ा भोंदू किस्म का हो और कोई ढंग से काम ना कर पाए. तो यहाँ पर ऑब्वियस है द करेक्ट आंसर for the word over here has to be option number 2. So guys, the correct answer should be clumsy equals to inept. Clumsy equals to inept. Lip lo comment section mein. Clumsy equals to inept. Somebody who's very unskilled and is not able to do anything properly. Okay. चलो भाई अब आते हैं वापस e-paper पे. Then we'll understand about this. Okay. So but unlike India, the track followed by all the 3 Kims appeared clumsy and foolish ever since North Korea sought to leave the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons regime. The posture was of threat and arrogance rather than peace or reconciliation. लेकिन देखा जाए वो चाहते तो हैं कि हम लोग इंडियन न्यूक्लियर मॉडल को फॉलो करें, लेकिन वो एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि उनके इतिहास से जो उनके पापा जी और जो उनके दादाजी रहे हैं, उन्होंने जब से उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए थे, तब से जो है देखा जाए आए थे या आने की उनको आशंका थी या वो धमकी दे रहे थे कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे, तो उन्होंने तब से एनपीटी साइन नहीं किया है. हालांकि एनपीटी ऐसा है जो कि इंडिया ने भी साइन नहीं किया है, बट देन अगेन इंडिया ने इसलिए बोला है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमको वी डू नॉट नीड टू साइन एनी पर्टिकुलर ट्रीटी, हम ऑब्वियस है रिस्पॉन्सिबल देश है और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करेंगे. ऑन द अदर हैंड नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा कि हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम जब चाहें तब हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे. तो उन्होंने धमकी दे करके जो है एनपीटी का साइन नहीं किया था, अनलाइक इंडिया. नाउ so perhaps the North Koreans definitely want that that they are actually that they follow the Indian nuclear model and they are treated as a responsible state with nuclear powers. But unlike India, the way that has been taken by the North Korean leaders, by the 3 Kims, it has been extremely foolish, and that is the thing is that actually entire step and their entire approach regarding not signing the NPT so that they can use whenever they want the nuclear weapons on whatever country they want to use the nuclear weapons is actually a really foolish and stupid step. Now, the direct threat that they face from the US, South Korea and Japan must have resulted in the aggressive approach. But now that North Korea has established its nuclear capability, it is inclined to negotiate its way into removing sanctions and shaping its future. नाउ ऑब्वियस है माइट बी देखो हम कह सकते हैं कि सर नॉर्थ कोरिया के साथ देखो उसको धमकी भी मिल रही थी अमेरिका से और साउथ कोरिया से और जापान से, और इसलिए देखा जाए तो वो अपने बचाव करने के चक्कर में उसने अग्रेसिव अप्रोच अपना लिया रखा होगा. लेकिन क्योंकि अब देखा जाए तो उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं, तो अब देखा जाए तो दोबारा से वो नेगोशिएट करके देखा जाए अपने ऊपर जो सैंक्शंस है वो हटवा सकता है और जो फ्यूचर है उसको अच्छे से मतलब आगे जो फ्यूचर चल के नॉर्थ कोरिया का है उसको आगे से अच्छा बना सकता है. ओके, so perhaps the way in which
it perhaps might be that the North Korean way of having extremely aggressive, of having a very aggressive approach against various countries, because the US and South Korea and Japan were threatening them together, might be because they simply wanted to respond. But then now the North Korea has established its nuclear capabilities. Now it should definitely renegotiate its way into removing the sanctions and limitations, and also be able to shape its future in a proper way. Now, in fact, it seems, that to be following India's choreography in shaping its nuclear policy. So definitely they are trying to follow India in getting its nuclear policy. तो वो obvious है, वो कोशिश कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करने की इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को, बट देन अगेन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और आई होप कि नॉर्थ कोरिया ये बात समझे. नाउ लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, लेट्स सी अबाउट दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैरा ओवर हियर. तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सत्य है पैरा के हिसाब से, ये आपको मुझे बताना है. ऑप्शन ए इज denuclearization is key to the whole process as it means different things to different people. Then option B, statement B is, but like India, the track followed by all the three Kims appeared clumsy and foolish ever since North Korea sought to leave the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons regime. Then statement C is, in fact, it seems to be following India's choreography in shaping its nuclear policy. So option number 1 is only A, option number 2 is only B, option number 3 is only C, option number 4 is only C and A, and option number 5 is only B and A. So which of the following is the correct answer, guys? You get 30 seconds and your time starts now. Hurry up, people. What's the answer over here? Hurry up, people, come on. Okay, guys, I can see last 5 seconds left for you. Hurry up, people, answer quickly, and then we move forward. Okay, so guys, what exactly is the answer now? Can you please see that? Okay, well, anyway, I'll have to give you the answers. So see, option A, option B, option C. Now, option B over here is the only one which is not true, because it should be but unlike India. और यहाँ पर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, but like India. But then again, हम ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है. Which of the following is true over here? और जितने भी लोग आपस में बतिया रहे थे और चटिया रहे थे और आपस में सिर्फ मस्ती कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, all of them are giving wrong answers. It is not option number 2. It is not option number 3, it is option number 4, only C and A. So guys, that's what I say. आप लोग जरूर मस्ती करें, जरूर बात करें, लेकिन जब मेन बात समझाई जा रही हो तो उसको समझे भी, और वरना आप ऑब्वियस है कि आप गलत आंसर्स ही दोगे, और अगर आप यहाँ भी गलत आंसर्स दे रहे हो तो एग्जाम में आपका क्या होगा ये आप समझ सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली C and A. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. चलिए अब आते हैं हम लोग जो हमारे पास ई पेपर है उस पे वापस. लेट्स सी अबाउट दैट. नाउ विजडम एट वुहान. Well, PM Modi and President Xi changed their tenor of India-China ties. They must build on it. तो obvious है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर development निकल के सामने आ रही है जो कि हुई है between India and China, and definitely we should build on it. Well, for an informal summit, the Wuhan meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping appeared to cover much ground over 2 days in terms of public appearances and in the two statements issued. तो देखा जाए तो सी बात तो ये हो रही कि इनफॉर्मल किस्म का समिट हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, जहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे. तो पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो जो जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस हुए हैं और जो 2 स्टेटमेंट्स इशू किए गए हैं उसमें देखकर काफ़ी ऐसा लग रहा है कि हाँ, गर्माहट जो है वापस इंडिया और चाइना के रिलेशंस में आ रही है. Most of their conversations were unstructured at informal events where they are accompanied only by translators. तो देखा जाए
तो उनके जो कन्वर्सेशंस थे वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड थे, ऐसा नहीं कि मतलब पहले से बने बनाए बातें कर रहे थे। और साथ ही में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी वो लोग अपने ट्रांसलेटर के साथ में लेके गए थे तो उसको देख के साथ साथ यही लग रहा था कि मतलब वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी क्या बोल रहे हैं कहने का मतलब कुछ बना बनाया नहीं बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। ओके, सो परहैप्स looking at the informal summit that happened recently between China and India with their president and prime ministers, well, looks like that a lot has been covered, in the last 2 days, whether it was just the public appearances of the two or the issues or the two statements which they have issued together. A lot looks like to have been covered by them both. And in fact, most of the conversations were actually pretty much unstructured. They were pretty much unplanned. And at many informal events that they were accompanied only by translators, look like that whatever they are speaking from the heart right away. Now, there was just one delegation level meeting, and the statements denoted the wide range of subjects discussed from bilateral to regional and global changes. ओके, तो अब देखा जाए तो सिर्फ एक डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई थी, डिप्लोमेट लेवल की मीटिंग हुई थी, और जो भी स्टेटमेंट वहाँ निकल के आ रहे थे वहाँ पर ये साफ साफ लग रहा था कि जितने भी सब्जेक्ट्स पर, मैटर्स पर इन दोनों में आपस में बातचीत हुई है वो सब कुछ जो है वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था। साथ ही में जो चैलेंजेस हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा था। Now, the statement denoted a wide range of subjects discussed from bilateral regional global challenges. On the bilateral front, they decided to issue strategic guidelines to their militaries to strengthen communication essential to avoid another Doklam-like confrontation. तो जो एक बहुत ही अच्छी बात ये आई वो ये आई कि इंडिया और चाइना ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो उनकी मिलिट्रीज है वो उनको क्लियर स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस दे दे ताकि डोकलाम जैसी जो अवस्था हो गई थी वो दोबारा से कभी ना हो। नाउ अ वेरी गुड पॉइंट over here that together, the China and India, they have decided that they are going to issue guidelines and provide guidance to their military so that once again they are not able to make another Doklam kind of a confrontation or problem. Now, so I hope guys that this has been clear to you. Now let's see question number 5. देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं question number 5 का, which is once again a vocab based question, and here comes question number 5 for you people. Let's see if you can answer this. So irritant का यहाँ पर क्या हो जाएगा antonym? Your options are aggravation, bother, burden and aid. So guys, what's the correct answer? Your time starts now. Hurry up my dear friends. Come on, you got 20 seconds to answer this. Okay, so I can see over here you guys are answering pretty well over here guys. Now, तो कुछ लोग, okay, Ramesh says burden, Jyoti says aid, Vikram says bother, Vikram says aid once again, and Rishika goes for option 4, Anil Yadav goes for option 3. Well, irritant means somebody who irritates or somebody who provokes or something that provokes. Okay, aggravation का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, aggression बढ़ा देना, to make or to worsen something. And bother, somebody to irritate somebody, ठीक है, तो किसी को परेशान करना, irritate करना, वो हो जाएगा bother. Burden का मतलब क्या होता है? भार बना देना, किसी का और ज़्यादा weight बना देना. All right, then perhaps aid means to help. ठीक है, मदद करना, हेल्प करना, तो दैट्स द आंसर ओवर हियर. और इरिटेट का ऑब्वियस है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी एड ओवर हियर. सो गाइस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन इरिटेंट, एंटो, एड. इरिटेंट, एंटो, एड. तो व्हाट इज द एंटोनिम? व्हाट्स द एंटो ऑफ इरिटेंट? इट हैज टू बी एड. सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन इरिटेंट, एंटो, एड. ओके गाइस, नाउ so let's come back to the e-paper once again, my dear friends. Well, both sides addressed measures to better balance the ballooning trade deficit of $52 billion of about $84 billion bilateral trade, mostly by encouraging agriculture and pharmaceutical exports to China.
तो अब देखा जाए इंडिया और चाइना के बीच में $84 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से देखा जाए तो जो इंपोर्ट इंडिया करता है, इनफैक्ट जो डिफरेंस है यानी कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में, वो है $52 बिलियन का। यानी कि देखा जाए तो तकरीबन चाइना का जो है अपर हैंड है, बिकॉज चाइना हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। नाउ सो मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जी डिस्कस अ जॉइंट प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। ऑलराइट, तो दोनों ने साथ में देखा जाए तो बहुत ही साथ में एक जॉइंट प्रोजेक्ट की बात भी करी है अफगानिस्तान में। फाइनली दे अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द हीट ओवर द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज एंड द सो कॉल्ड इरिटेंट्स इन द नेशनल इन द रिलेशनशिप सच एज चाइना's block on India's NSG membership bid for the UN terror designation for Pakistan or the UN terror designation for Pakistan based groups and India's position to the Belt and Road Initiative or its use of Tibet issue. Okay, तो साथ में देखा जाए तो दोनों ने ही कोशिश ये करी कि जो गर्मी हो रखी है अलग अलग चीज़ों को लेकर के, थोड़ी सी वो गर्मी कम करे। फॉर एग्जांपल चाइना के जो बार बार ब्लॉकेट कर रहा है इंडिया का जो एनएसजी मेंबरशिप के लिए, थोड़ा सा उस पर बातचीत बने, कुछ उस पर बात हो पाए। साथ में देखा जाए तो इंडिया ने जब मसूद अजहर को कोशिश किया था कि हाफिज सईद को जब कोशिश किया था कि इसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो प्रॉब्लम करी चाइना ने, तो वो नहीं होने दिया। तो ये गड़बड़ वाली बात थी। साथ में देखा जाए तो चाइना जो इंडिया का ऑपोजिशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कि वो पीओके से होते हुए जा रहा है और ये चीज़ सही नहीं है, तो इस पे बातचीत हुई। साथ ही में जो तिब्बत का इशू है, बार बार जो चाइना परेशान है तिब्बत को लेकर के, इंडिया इस्तेमाल करता रहता है, तो इन सब पे बातचीत हुई है। सो परहैप्स बोथ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कस दैट हाउ कैन दे रिमूव the 52 billion trade deficit in that 84 billion billion dollar trade that takes between India and China. Moreover, they discussed a joint project in Afghanistan and they also attempted to reduce the heat over the various issues. Now, for this, existing mechanism of dialogue will be strengthened, not allowing broader bilateral movement to be hit. तो obvious है इसको कैसे resolve किया जाए, तो ओपन तो हुई है बातचीत, लेकिन resolve कैसे किया जाएगा और बातचीत करके अच्छे से diplomatic level पर. Okay, so how do they discuss, how do they plan to sort out the issues between India and China? Well, they think that diplomacy should play a very important role and hence more and more diplomatic talks should take place. Okay guys, anyway guys, now let's come to the Parajumble that we have here for you. I think you would have understood the theme of this particular article. Now let's see the Parajumble that we have here for you, my dear friends. Okay, so it's a very beautiful looking 8-sentence Parajumble. I'm going to give you 90 seconds and I'm sure that you will be able to make this Parajumble. वो simply बस करना क्या है, subject निकालो, logical pairs बनाओ और सही order निकाल के दिखाओ. ठीक है guys, you get 90 seconds and I'll be watching who's the first one to get the correct Parajumble. Okay guys, your time starts now. Hurry up, make the Parajumble. $75 seconds left to make the Parajumble. Hurry up. Come on people, you can make this. Only 30 seconds left now. Make the Parajumble people, come on. $20 seconds left. Hurry up. Last 10 seconds left. Hurry up people. You can make this. Come on, try and make this. You can make this, guys. Come on. 5 seconds more, guys. Come on, tell me, what's the Parajumble? Okay, well, so perhaps, the time is over for you, my dear friends. Looks like that all of you tried very well. So I'd like to clap for all of you who tried giving the Parajumble. जिन्होंने भी Parajumble को attempt किया है और उसका जवाब दिया है, मैं चाहूँगा वो अपने लिए ताली ज़रूर बजाएं. Because देखो,
I can accept failure, but I cannot accept not trying. Okay, so all of you who tried your best to make a Parajumble, you deserve to applaud for yourselves. ठीक है guys? Now, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो सही ऑर्डर है उसको देख लेते हैं. So guys, can I have the correct order over here? Next slide please. Well, the correct order over here is FBEADHCG. The correct order is क्या? ये है, देखो F से start होता है, यहाँ पे दिया हुआ है for an informal summit, the Wuhan meeting between whom? Between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President, given statement B, Xi Jinping, appeared to cover much ground over the what? Over the 2 days in terms of public appearances and in 2 statements issued. ये दिया है statement A में. फिर क्या? Adding more information given in option A. Most of their conversations were unstructured at informal events where they were accompanied only by translators. Okay, then what? Then comes D, that says there was just one delegation level meeting. The statements denoted that the wide range of subjects discussed what? From bilateral to regional and global challenges on the bilateral front. That's given statement H. Then followed by statement C that says they decided to issue strategic guidance to their militaries to strengthen communication, essentially to avoid another Doklam-like confrontation. The correct order over here, FBEADHCG. So guys, I think most of you have got this order. So good job, my dear friends. बहुत सही काम किया है आप सभी लोगों ने. Now let's see the next question that we have here for you. Question number 7 and question number 8. Let's see about them. Next slide, please. Okay, so guys, here's question number 7 and question number 8 for you. तो देखो question number 7 देखो दिया हुआ है, for this existing mechanisms of dialogue will be strengthened, not allowing broader bilateral movements to being hit. Then question number 8 is such a conciliatory approach from Delhi and Beijing has been evident over the last few months of preparation for the Wuhan meeting, with double sides turning down the post-Doklam rhetoric. Okay guys, so what exactly is the correct answer? What are the errors in question number 7 and question number 8? You get 1 minute and your 1 minute starts now. Hurry up people. Okay guys, last 15 seconds left to answer both of these questions, so hurry up. Okay guys, last 5 seconds left. Hurry up. What's the answer over here? Come on. Alright, now see. So question number 7 over here clearly states, for this existing mechanisms of dialogue will be strengthened, not allowing broader bilateral movements to being hit. अब देखो obvious सी बात है कि जब आप to be लिख रहे हो, whenever we talk about the phrase of to be, whenever you use to be before a main verb, वहाँ पर being नहीं लगता है. Alright, so the usage of being is wrong over here. That is why the error has to be in part 4 for question number 7. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, सही जवाब क्या है? It has to be question number 7, part 4 has the error. Okay, now coming down question number 8, देखो यहाँ लिखा हुआ है, such a conciliatory approach from Delhi and Beijing has been evident over the last few months of preparation for the Wuhan meeting, with the double sides turning down the post-Doklam rhetoric. Rhetoric का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of rhetoric? Come on people, 10 seconds for you. Rhetoric का मतलब क्या है? What is the meaning of rhetoric over here? Let's see, you can answer this people. What's the meaning of rhetoric? 5 seconds left for you to answer now. Meaning of rhetoric, my dear friends. Well, rhetoric means bhashanbazi. What does it mean? It means bhashanbazi, and in fact, you know, इस केस में जो काफ़ी जो है कह सकते हैं आप प्रोवोकेटिव किस्म की भाषणबाजी थी. Rhetoric means भाषणबाजी over here. Alright guys, now so perhaps you know the double sides, with double sides turning down the post Doklam rhetoric. अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है
you needed, you need to give a reference over here, right? You need to give a reference over here. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक देखा जाए, you needed, what do you say, you needed something which is kind of an indefinite over here. तो यहाँ पर ना आपको एक indefinite किस्म की चीज चाहिए थी जो कि दोनों को ही डिनोट करे. ऑलराइट, डबल साइड्स इज मोर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल ना करते हुए, बिकॉज यहाँ पर डबल क्या हो जाएगा, नंबर शो करेगा. रादर वी हैव टू गो विद एन इनडेफिनिट ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स यहाँ पर जो सही रहेगा वो कुछ और रहेगा. क्या बोलते हो आप लोग गाइस? यहां पर पार्ट 4 में शुड इट बी डबल साइड्स और शुड इट बी बोथ साइड्स? क्या बोलते हो गाइस? आई एम आस्किंग यू इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. क्या यहां पर डबल साइड्स होना चाहिए या फिर यहां पर बोथ साइड्स होना चाहिए? व्हाट डू यू से गाइस? डबल साइड्स और बोथ साइड्स? क्या लगाएंगे? कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू. 10 seconds फॉर यू टू आंसर नाउ. Double sides or both sides? What shall we use in part number 4? You need to tell me guys. बताओ क्या लगता है आपको? डबल साइड सही है या फिर बोथ साइड लगाना सही होगा? क्या सही होगा गाइस, बताओ. कम ऑन पीपल, डबल साइड्स और बोथ साइड्स, व्हाट शुड बी यूज ओवर हियर? वेल, बिल्कुल. सो आशीष कह रहे हैं बोथ साइड्स, आकाशदीप सेज बोथ साइड्स, and Tenali Rama something else, I don't know what he said. Vikas says both sides and Prabhat also says both sides. So the correct answer over here has to be both sides, my dear friends. इसका मतलब क्या है? Question number 8, indefinite adjective. The correct one has to be both over here, which means 8-4 is the answer, and I think all of you have answered the same. So good job, my dear friends. ठीक है, अब देखते हैं last 2 questions क्या है हमारे पास. So let's see about them as well. Now question number 9 is right here for you, my dear friends. तो बताओ question number 9 में किस पार्ट में क्या गलती है? Well guys, you get 30 seconds. Time starts now. Hurry up people. Last 10 seconds left for you to answer now. Hurry up guys. Okay, people, 5 seconds more. What's the error? Question number 9. Come on, guys. All right. So the message from Wuhan is an overreaching one. All right, overarching one. All right, that despite of bilateral and geopolitical differences, India and China can resolve differences peacefully and through prolonged dialogue. Okay, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है despite of, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा guys, in part 2 of question number 9 over here, is in spite of correct or shall be used despite over here? In despite of, what do you say guys? In spite of या फिर despite of? क्या लगना चाहिए guys? You get 10 seconds for you to answer. In spite of is correct or shall we use despite of over here? What do you say, my dear friends? In spite of or despite of? What shall we use? 5 seconds left for you now. In spite of should be used or despite of should be used? What do you say guys? Okay, so Somesh says in spite of. All right, and I think Akashdeep also says in spite of. Well, then Sanuj says despite of nahi hoga. Ashish says in spite of, and Srilekha also says in spite of. So good job guys. Yet it has to be in spite of over here. ठीक है, तो ये सही जवाब होगा. So all those of you who said in spite of hoga, yeah, the error is in part 2 of question number 9. You guys done a good job because that is the correct answer. अब जल्दी से निपटा लेते हैं question number 10, then we'll stop this. So despite both countries' atomic weapons arsenals, parleys have never carried even a hint of the nuclear overhang. So guys, what's the correct answer over here? You get 30 seconds. Tell me the error in question number 10. Time starts now. Hurry up, people. So 20 seconds left to answer now. What's the answer of question number 10?
Okay, people, come on. What's the answer over here? Well, तो देखा जाए, somebody is saying the error is in part 1 और कुछ लोग कह रहे हैं the error is in part 2. So tell me guys, मैं आपसे पूछना चाहूँगा the error is in part 1, 10-1 or 10-2. Time is over, so you need to answer quickly now. So tell me, my dear friends, the error is in part 1 or is it in part 2? What do you say guys? 10th में 1 में गलती है या फिर 2 में गलती है? I'm asking you people, tell me, question number 10 में part 1 में गलती है या part 2 में गलती है? So you will get 5 seconds only to answer now. Hurry up guys. Error in part 1 or in part 2? What do you say? The error is in part 1 or part 2? What's the answer over here? So, only country says Dona over here. Purnima says A, that's part 1. Dheeraj says part 1. Pramod Hegde says part 1. Divya Chaudhary says part 4. But the one who's correct over here is Saurabh Roy, who says there is no error. So whether it's part 1, despite both countries' atomic weapons, arsenals, parlays have never carried even a hint of nuclear overhang. Okay, the complete statement is correct grammatically. There is no error. The only error is that there was no error. So that means the correct answer, my dear friends, is no error for question number 10. That means, my dear friends, 10-5, no error is the correct answer. Now let's come back to the center screen over here. So guys, I'd like to apologize to all of you that the video should have started at 2:30, but it could not because of certain issues over here. And I think, I've got desperate, I've got a very bad enmity with the YouTube people, and perhaps that's the issue. But anyway guys, देखा जाए तो जो हम लोग का last session था on, I suppose, Saturday, that was regarding spotting errors, that we couldn't do that day because of some connectivity issues. But then again, today again we have another show at 6:15, and all of you should come over there. और आप देखोगे कि जो भी spotting errors है वो लोग हम लोग वहाँ पर साथ में solve करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी. So now, having said that, so if you actually like the video, so do like the video. Don't forget to like the video, share the video with your friends, and also give us your feedback in the comment section. Till the time we meet next time, peace out.